Hello students. Standard 10, subject Social Science, chapter number 13, Manufacturing Industries, session 4. Students, in the previous session we discussed about different industries in the field of transport equipment making. Today in this particular session we will continue some industry which are yet included under the category of transport equipment industry and some other aspect of chapter 13. So let's start. Under transport equipment industry, another industry which is growing in India is shipbuilding industry. This is an ancient India industry in our India. In recent times, there are centers to build the ships of the modern style. Students, in India, since the ancient time, we are building and constructing ships. Earlier, such kind of ships which can be used to voyage or to you know, transport from one country to another country, those ships were made out of a solid woods. But over the period of time, as now the different materials and the minerals are available, with help of those minerals and materials, nowadays in a modern time we are building extraordinary creative ships with the modern facilities. These ships are made at Vishakhapatnam, Kolkata, Kochi, Mumbai, and Marmagao. All these centers of shipbuildings comes under the category of public sector industries, which is owned and managed by Government of India. Kochi and Vishakhapatnam build the ships of a larger size, which is also including the ships for the cargo purpose, means to transfer the goods and heavy material specially. Private dockyards fulfills the local needs. We have also started producing the helicopters at the domestic levels. Along with that, aircraft building units are also established at Bangalore, Koraput, Nasik, Hyderabad and Lucknow. The buildings of aircraft for the passenger travels has still not started in India. Means in a modern time, the most quickest mode of transport, that is the airlines. But India में आज भी due to lack of some sorts of technology and finance, yet we are not constructing एयरक्राफ्ट फॉर द पैसेंजर्स, मीन्स ऐसे एरोप्लेन्स हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं अभी भी इंडिया में जिसमें पैसेंजर्स का मूवमेंट होता हो, राइट. अदर देन दैट, मोस्ट ऑफ द transport equipment we have started producing at a domestic level. Now electronic industry, one of the key industry which is growing in the modern time with a good speed. Students, as you know, today we are living in the 21st century where most of the gadgets or articles which we are using is based on electronic formation, which is making life easy, comfortable
and it is also saving our time and efforts in order to perform the different works. At the same time, there are so many other electronical items which also provides the sorts of entertainment in our life. So radio set and telephone industry was established in India in 1905. Question for objective. This can be said to be the beginning of the electronic industry in India. कि जब हमने इंडिया में रेडियो सेट बनाना और टेलीफोन बनाना शुरू किया, तब से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का बिगिनिंग हुआ. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, that is a BEL, was established in 1956 in Bangalore with the purpose or motive to manufacture the equipment for Akashvani and weather department. Akashvani means the news which they used to telecast over the radio, and the weather department in order to forecast the different temperature, monsoon, winter information, etc. Today, it produces the various electronic equipments in collaborations with the Indian Space Research Organization. Today, Bharat Electronic Limited is also producing variety of electronic gadgets which can be used in different spacecraft also. This industry has brought a lot of change in the normal life of the people and their lifestyle and the national economy. कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ से बनने वाले जो वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, उसने आज हमारी लाइफस्टाइल को बहुत इम्प्रूव कर दिया है. एज आई टोल्ड स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हमारे घरों में आज अवेलेबल है इंक्लूड्स द टीवी, वॉशिंग मशीन, वीसीआर, है ना, कि दो लॉट्स ऑफ किचन अप्लायंसेस, ये सभी के थ्रू हमारी लाइफ में बहुत ईजीनेस आया है. बहुत से काम आसानी से हो जाते हैं विथ लेस फिजिकल एफर्ट्स, एंड दैट्स वाई ओवरऑल लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड. एट द सेम टाइम द लाइफस्टाइल ऑफ द एंटायर नेशन और पूरे इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस आया है. बेंगलुरु हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ दिस इंडस्ट्री. It is also called the Silicon Valley of India. Due to more concentration of electronic industries in a Bangalore region, Bangalore is considered as a capital of electronic industry, and it is also named as Silicon Valley of India. Questions for objective, or it can be asked in 2 marks, that why the Bangalore has become a capital of electronic industry, or you can say why Bangalore is considered as a Silicon Valley of India. So your answer will be point number 2, 3, 4, 5 and 6. Software park, science parks and technological parks are established for the development of these industry into different states. The future of these industry in India is very optimistic, very positive and very bright. Now few other related aspects, students, related with the industrial sector. Yes, it is important for the country to get developed very rapidly and quickly, especially for the country like India, जिस कंट्री ने दूसरे कंट्रीज़ के डोमिनेंस में या तो गुलामी में 200 साल से ज़्यादा का एक्सप्लॉयटेशन फेस किया हो, और जिस इकोनॉमी के सामने आज हाई पॉपुलेशन, लो एग्रीकल्चरल इनकम, लो पर कैपिटा इनकम, लो नेशनल इनकम, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये सब क्वेश्चन जिस इकोनॉमी के सामने हो, उस इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की हेल्प के थ्रू क्विकली डेवलप होना बहुत ज़रूरी है to sort out the different problems related with the poverty, unemployment, national income, per capita income. But as we know that development always comes with some sorts of drawbacks and negative impact. Same way here also, the blind following to develop the country on the name of industrial sector brings some sorts of negative impact on your natural environment.
So the concept of industrial pollution and environmental degradation. Industrial production has a noteworthy contribution in economic development of the nation. As I told कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको अचीव करना है क्विकली तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ और प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी है. Industries have increased the pollution and the environment has degraded, but lack of planning, lack of proper implementation of the government made laws, lack of care about the environment has created the pollution in the atmosphere because of industrial sectors और उसी की वजह से हमारा environment day by day degrade हो रहा है. When the environmental conditions deteriorate due to the natural or man-made induced reasons, the quality of the environment is reduced, which is called the environmental degradation. A question for 1 mark, that what is environmental degradation? The answer will be point number 3. कि जब environmental conditions spoiled होने लगे और उसका reason हो man-made factors और man activity, और धीरे धीरे एनवायरनमेंट का जो क्वालिटी है उसका भी डाउनफॉल होने लगता है एंड द क्वालिटी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, such an impact can be considered as a environmental degradation. Mainly there are 4 types of pollutions that are created due to the different industries, that includes air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. So as you have already learned few part of these students in your social science standard 9 है ना chapter 20. So these different pollutions are creating lots of negative impact day by day over the environment also, at the same time on the life of the human beings also. In exam you may get the question for 1 or 2 mark, what are the different types of pollution created by industry? So the answer will be last point. Industries have polluted air and water to a great extent. You can see here in the image given कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पॉल्यूटेड स्मोक, डर्टी वाटर, प्रॉपर प्रोसेसिंग के बिना एनवायरनमेंट में रिवर्स बैंक, पॉन्ड, नियर बाई लेक या ओपन लैंड पे ही ऐसे ही डिस्पोज कर दिया जाता है एंड दैट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर द एनवायरनमेंट. The air has become the polluted due to the very harmful gases like the carbon monoxide and the sulfur dioxide. Carbon monoxide, most of the transporting vehicle which we are using, that releases the different smokes and that creates the problem in the atmosphere. At the same time, sulfur dioxide and other harmful chemicals which get released in the atmosphere because of the excessive use of air conditioners and refrigerators. Water pollution has also increased due to the industrial effluents जो हमने अभी previous slides में image में देखा. Today many factories release their industrial waste in the rivers ignoring the law. As I told कि जब industrial sector से different effluents या wastage material release किया जाता है या dispose किया जाता है, industrial sectors and the owners does not care about the nature, वो नेचर की केयर नहीं करते. गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करते हुए अपने पर्पस और प्रॉफिट के लिए वो सब वेस्टेज नेचर में ही डंप कर देते हैं एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट पॉल्यूशंस. वाटर टुडे इज हेवीली पॉल्यूटेड देन द बिफोर. Noise pollution is also one of the reasons for the deafness in the human life. Day by day जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं या जो भी ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स है उनके जो हॉर्निंग सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बजने वाले और क्रिएट होने वाले हैवी साउंड्स, ये सब ह्यूमन की ईयरिंग कैपेसिटी पर इम्पैक्ट डालते हैं और डिफनेस का लेवल बढ़ रहा है. Due to use of old machinery in industries and means of transport, the noise pollution is also increased.
कि टेक्नोलॉजी जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो पुरानी हो जाने के बावजूद उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, प्रॉपरली उसका सर्विस करके उसे मेंटेन नहीं किया जाता, एंड दैट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन एंड वेस्टेजेस ऑल्सो. Man experiences the mental tension due to such kind of noises on a regular basis. अगर ऐसा डिस्टर्बिंग नॉइस रेगुलरली हम पर इम्पैक्ट डालता रहे तो हमारा मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, एंड इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. नाउ एज वी हैव सीन द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, है ना, कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है और पॉल्यूट हो रहा है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द क्विक सॉल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स, एंड दैट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ रेमेडीज टू कर्ब द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. Or in exam, the question can be asked in a twisted way. What are the measures to solve the problem of environmental degradations? Steps that can be taken to curb the environmental degradation. In any way, the question can be twisted and asked in exam. So you must be aware, students. The country should make the progress, but the progress should not be made in such a way that the environment is not degraded. कि कंट्री को प्रोग्रेस करना ज़रूरी है, अग्री, बट कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ आपको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखना होगा, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को भी कंजर्व और प्रोटेक्ट करना होगा. सो देयर शुड बी बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर which also take cares about the environmental conditions. The amount of pollution can be reduced with the proper planning for industrial development. कि each and every industrial sectors के owners and producers इस बात की केयर करें कि उनके इंडस्ट्रीज़ की वजह से एनवायरनमेंट में लेस से लेस नेगेटिव इम्पैक्ट हो. उनकी फैक्ट्रीज से निकलने वाले लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस वेस्ट का वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही एनवायरनमेंट में डिस्पोज करे, ताकि उससे होने वाला डिग्रेडेशन और पॉल्यूशन रोका जाए. Pollution can be reduced also by selection of the quality equipments and the fuels. बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए. रेगुलर बेसिस पर जो भी मशीनरी और इक्विपमेंट्स है उनकी सर्विस की जाए, उन्हें रिनोवेट और रिपेयर किया जाए, ताकि उससे होने वाला वेस्टेज और पॉल्यूशन कम किया जा सके. The air pollution can be curbed through the filters, scrubbers and precipitators. कि जब भी गैसियस वेस्टेज रिलीज किया जाए उसको प्रॉपरली ट्रीट करके उसे फिल्टर करके स्क्रबर एंड प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस से पास आउट करके रिलीज करें, ताकि होने वाला इम्पैक्ट कम से कम हो. The water pollution can be prevented by releasing the industrial effluents after the proper treatment. That whenever the industries are disposing their liquid waste, harmful chemicals, substance and harmful solid waste should be filtered and separated, and then those effluents should be disposed in the environment. Industrial water can be purified after the due treatment. और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्टेज वाटर है उसको भी प्रॉपरली ट्रीट करके लिटिल बिट प्योरीफाई प्रोसेस से पास आउट करके उसे डिस्पोज किया जाए. और जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेजेस है उनका डिस्पोज ओपन लैंड, रिवर, लेक, पॉन्ड ये सब में ना हो, उसकी खास केयर ली जाए. सो स्टूडेंट्स, this was all about your chapter 13. I hope the session wise explanation will be helpful to you. Keep on revising and keep on learning. Stay safe, stay blessed.